Midday.com is today talking to Anu Aggarwal. Anu Aggarwal is a name that we all remember, all the 90s kids. We have grown up with that, oh my god, chiseled face. Those songs from the film that, she made history in. So we are really excited, and let's talk to her and let's find out what keeps her busy nowadays. Hi Anu. Hi, and I'm so excited to be Same talking here, to you. same here. जब ये इंटरव्यू करना है, ये डिस्कशन हो रहा था, so I was remembering those songs and your looks. I remember I was not even You're a at school. teenager. Yeah, I was not even a teenager, but Right. अच्छा ये फ्रॉक ऐसा स्टिच हमें भी करवाना है, So you were a trendsetter. If we talk about your life, you have gone through lots of ups and downs. हम उन सब के बारे में फिर से आपसे पूछना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो कहानी आप कई बार बता चुकी हैं, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि what makes you stand tall even today? What is that magic, Anu? This tall, तो मतलब मैं हुई tall. So whether I like it or not, Philosophically, I I'm cannot stand asking. short. मैं तो हमेशा लंबी ही खड़ी होगी. In fact, I had written a poem which said that I'm all in a straight line. And फिर मैंने सारे, my hair is straight, my, so all of the things, my spine is straight, all the things I had, legs are straight, everything that is straight in me. I really, really, really believe that faith, अपने को छोटा समझना, अपने को बहुत कि मैं ये हूँ, क्योंकि जब आप इतना अचीवमेंट करते हैं और आपके लोग इतने आपके बारे में पागल हो जाते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू गेट एन ईगो, दैट वैनिटी कि मैं भी कुछ हूँ. एंड वन ऑफ द थिंग्स राइट फ्रॉम स्टार्ट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं लोगों के साथ में एक ही हूँ, मैं कोई उनसे अलग कोई बहुत बड़ी या चीज़ नहीं हूँ. आई एम अ नॉर्मल पर्सन. And to have faith in the super soul, God, कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी दुआ से हो रहा है. मैं अपनी तरफ से जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी. But at the end of the day, the decision, if I succeed or not, मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, it's all His. And I think that faith has kept me going through all the ups and downs in my life. Were you like this पहले से, या बिकॉज एडवर्सिटीज आती है जब हमारे लाइफ में तो हमारा फेथ बढ़ता जाता है, Right. what happened, in that matter with you? No, so the thing is that again, little is known about my background. Yeah. Because my parents are not here. I was always living alone. But इसलिए लोगों को ये पता नहीं है कि मेरी जो फैमिली है बहुत एक्सट्रीम में स्पिरिचुअल है. And when I say spiritual, I don't mean religious, कि मंदिर जाना या मस्जिद जाना या चर्च जाना और praying to God. No. When I say spiritual, I'm talking about being humanitarian. कि हमारे पास है और हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं. And that in my family, since I've grown up with this, like even my father who started his life with the Air Force, तो वो उसके बाद में इकोनॉमिस्ट बन गए थे, बट वो तो एयर फोर्स तो उनमें ऐसी जड़ कर गई थी, तो हमको बचपन से वो हम ये कहते थे कि ये मत देखो कि तुमको क्या चाहिए, ये देखो कि दूसरों पे क्या चाहिए और तुम क्या दे सकते हो उन्हें. My entire upbringing is कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों के बारे में सोचो. You've got enough. What do you mean you don't have enough? You've got food. You've got two meals a day. That's enough. उससे ज़्यादा क्या चाहिए तुमको. छत है तुम्हारे पास सोने के लिए, लोगों के पास इतना भी नहीं है. The beginning I used to just feel कि I am fine और जो मुझे मिल रहा है वो बहुत है. And be thankful, be grateful, और दूसरों के लिए जिनके पास नहीं है, उनके लिए जो नीडी हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरे अंदर हमेशा ख्याल रहा है. समवन जिसके मन में ये एक भाव रहता है कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकती हूँ, ऐसी एक शख्सियत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आती है, ग्लैमर वर्ल्ड में आती है. मॉडलिंग से आपने शुरू किया था, एंड वी ऑल नो इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, बट वी ऑल्सो नो द डार्क साइड.
So the kind of people that you met, people who you remember because they were really good to you, some incidents that really shook you because आप जब आई तब you were very young, तो भले आपके मन में अच्छाई का भाव होता है लेकिन आपके साथ कुछ गलत होता है तो एक for a millisecond also it will hurt you कि why really. तो ऐसी कुछ बातें some really good memories, precious memories which you can share, and some incidences maybe you would want to share. The thing is कि one of the things I realized very early, and that's what actually kept me going ahead and going forward, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत मुश्किल थी और जैसे कि मेरी मम्मी कहती थी कि तुमने तो अपनी लाइफ इतनी मुश्किल बना ली है, क्यों? तुम लड़के खड़े हुए हैं शादी करने के लिए, तुम 16 साल की थी तब से रिश्ते आ रहे हैं, पर तुम ये कहती थी कि नहीं मैं तो, पर तुम पढ़ाई में इतनी तुम टॉपर थी तो हमने भी कहा चलो पढ़ाई करने दो लड़की को, तो तुम पढ़ाई करती गई और उसके बाद तुम बोली कि मैं तो इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो हम लोग क्या कहते तुमसे? What we could do is support you, and I'm so grateful that I have understanding and supportive parents. Because 30 years ago, parents, a girl saying that I want to live alone and be independent, parents तो घर में उसको पकड़ के घर ले आते थे पापा। मेरी एक आध फ्रेंड्स के साथ हुआ, वो दिल्ली से बम्बई आ गई फ्लाइट लेके कि now I'll be on my own, get a job. Father came within a week and took the daughter back. So that didn't happen with me, and I'm just again grateful that I had parents who were supportive. And on the same hand, I also realized that life is difficult and everybody is not good to you, because when you're a girl and wherever you go you just attract attention. Like I don't, it's not like I'm trying to be attractive, or I walk in and say कि मेरी तरफ देखो. उल्टा होता था, मैं कहती कि मैं घुसूंगी तो लोग देखना मेरी तरफ क्यों कर देंगे. And this has been happening since I was a kid. So I just had no choice. I just used to draw attention, and when you're drawing attention, all kinds of energies come to you. Yeah. तो बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, और jealousy is something जो मैंने बचपन से डील करी है from women. When my mother says कि तुम 3 साल की थी तो मैंने तुमको अच्छी फ्रॉक पहना के किसी पार्टी में मैं लेके गई, कहती तुम वहाँ चल के वहाँ तो तुम मॉडल की तरह कैसे वॉक करने लगी. मैंने कहा ये कौन है, क्या कर रही है. वहाँ जाके कैमरा के सामने पोज करना शुरू कर दिया, वहाँ कैमरा जो खड़े हुए थे, और जाके अंकल की लैप में जाके बैठ गई. वो आंटी जो है वो परेशान हो गई कि तुम कर, ये लड़की कहती है मैंने तुम बचपन से तुम्हारी जेलसी देखी है. लेडीज हु वर, the auntie was 40 and you were 3. She says, but with the attraction that you drew, a lot of insecurity and jealousy has been coming, and that's something that I faced all my life. And it became really difficult when I became Especially after Aashiqui, क्योंकि उसके बाद तो मतलब कि flood हो गया. So of course there are a lot of people who were who were totally in admiration and totally, but a lot of people who were in admiration were also jealous also. A lot of girls कि ऐसी life कैसे हो सकती है. Nobody understands कि तुम्हारे अंदर, they don't know the backstory. They don't know what is happening behind the closed doors. What difficulties you are facing. So I think that early on in 1991, I'm so again grateful that I was taken to do Vipassana by, in fact, a Spanish flamenco dancer who was here. Yeah, my life is so dramatic. Wow. I don't have a choice in that. So she took me to do Vipassana. She said, "ये 10 दिन का course है." Now, one of the things, and that was the time when Aashiqui just released, and it was just, I was flooded with the paparazzi, with and I was living alone. So घर लोग मेरे घर के बाहर खड़े, and I was in my early 20s, so I had no idea कि how to tackle with this, क्या करूँ. And I went and did Vipassana, and उसमें एक चीज़ मैंने ये सीखी कि just let go, meditate, calm your mind, and just let go and wish everyone well. So I think that is something that has really, 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 अब मैं आपको बताऊंगी कितनी सारी जो चीज़ें हुई. And I just don't it's not my hobby to talk about the bad things that happen in my life, and the good things are there for everyone to see. So there's nothing to talk about really. I think I really like the idea of living
in the now कि आज इस समय मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या, मेरे अंदर क्या विचार आ रहे हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ. And so I think that's a marvelous practice क्योंकि उससे दिमाग इतना शांत हो जाता है. So getting into the past and is not a hobby at all. पर हाँ, कुछ चीज़ें मैं सीखी हैं मैंने जो, because it's the lessons learned which dealing you with have people. to learn Yeah. and be again grateful that you were taught those lessons. Like thank your enemies, thank the people who pushed you out of glamour or that whole thing that happened at that time, that madness. People were not doing it, but with that excessive fame that I was getting, जो मेरे लिए तो मतलब कि ये हालत आ गई थी कि मतलब मैं कैसे घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ. आपकी गाड़ी ब्लैक कलर के विंडोज लगानी पड़ रही हैं बिकॉज ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, और उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, लोग मेरी गाड़ी पहचानते थे. तो गाड़ी अगर कहीं जाके खड़ी हुई ट्रैफिक सिग्नल पे, ट्रैफिक जैम्स, people running to my car, leaving their car in the traffic jam, hundreds and thousands of people banging my car door. I mean, it's just like created fear, and I just started to get scared because, and I was, like my mother says, you're a fearless child. मतलब मुंबई आके अकेले रहना, इससे ज़्यादा fearless उस 30 साल पहले क्या हो सकता है, right? So I was totally fearless कि I can tackle it. But stardom, wow, with that fame was so difficult to tackle. Like I couldn't tackle it. And I just said, okay, I'll take a break, and I never visited. I mean, you actually chose to leave the film industry when you were right on top, Yeah. And, I was just going to ask you that maybe you were one of the very first actresses, with the dusky skin tone. आज हम लोग body positivity and color and this and that ये सब social media की वजह से बहुत सारी बातें करते हैं. तब तो उस जमाने में approach बहुत अलग था. Right. मतलब न्यूज़पेपर की ad में आज भी आता है, but वही लंबी गोरी convent educated but वो जो आपने एक glass ceiling break की थी and then just leaving everything, was it just the fame जिसकी वजह से you decided कि बस नहीं करना है? I think that I can give you so many reasons, because, कि ये था, ये नहीं था, I can, because those reasons are being made by the mind, but I have gone beyond the mind and I understand today that, हर चीज़ का एक cycle होता है. Origin, management and destruction. Generation, organization, destruction is what God is. ब्रह्मा विष्णु महेश. जो चीज़ जब वो पैदा होती है तो ये तो पूरा यूनिवर्स जो है वो सर्कल में घूम रहा है. पैदा मौत. That's happening at cellular level. So the thing is that I achieved everything possibly because लोगों को टाइम लगता है चीज़ें अचीव करने में. It's not like कि आशिकी हिट हो गई, that's achievement, वो enough हो गया. नहीं. When I say that, I mean the contentment that is there karmically in you. कि ये मुझे और चाहिए. जब तक आपकी वो आपके अंदर है कि मुझे चाहिए, वो एक नीड जो थी वो आपकी खत्म हो गई, वो डिजायर है कि कितना भी मिल जाए, नहीं मुझे और चाहिए, तब तक आपका वो सर्कल पूरा नहीं हुआ है. बट फॉर मी आई हैड रीच माई जेनिथ बिकॉज मैंने पिछले जन्मों में बहुत अचीव कर लिया है. मुझे इस जन्म में ना मुझे कभी बहुत, वाकई में कहूँ तो ऐसा नहीं था कि मैं अपनी फैमिली करूँगी, बच्चे करूँगी. क्लास में लड़कियां बातें करती थी जब हमारे कॉन्वेंट स्कूल में. नेवर इवन क्रेव्ड It was फॉर never लव. there. चलो फैमिली या बच्चे नहीं, था ही नहीं, Not even love? बचपन से नहीं है. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि ये, so it's like what is wrong with me, you understand, like because a monk who became a model. Exactly. तो बचपन से मैं देखती थी लड़कियों को कि they used to desire कि I want to have a baby. Literally when we got our periods, 10-11 साल की लड़की, जहाँ ये होता था, that feeling, the motherhood की feeling immediately आती है लड़कियों में. And I used to think कि यार ये मेरे में क्यों नहीं आ रही है. I used to listen to all the girls, but I used to keep quiet because I mean, like, I don't know, something is not right. I mean, समय मुझे I could not understand. But then as I started to grow up, I said okay, and then I nearly got married also with my first boyfriend. But then it didn't work out. Somehow just didn't happen. जैसे कि होना ही नहीं था. अभी भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है. क्या तो किसी भी समय हो सकता है. Anything can happen. But the thing is that what I'm trying to tell you is कि जो आप कह रही थी कि भाई आपने जो है कैसे ज़ेनिथ पे छोड़ दिया, और मेरे जीवन का जो चक्र चल रहा है वो मुझसे बड़ी एक सत्ता है जो चला रहा है. एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड आई हैव अंडरस्टूड इट एंड आई मूव ऑन विद लाइफ. वो कहते हैं कि आप इफ़ यू थ्रो अ लीफ इन द वाटर इट जस्ट मूव्स विद द वाटर, एंड एज द वाटर गो, तो जैसा पानी जाएगा ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी. Go with the flow. Yeah. And I Doesn't try to said, be swim. like a leaf. Be like a leaf. And that's the most beautiful way and the most beautiful my sadhana. अगर कोई spiritual साधना है तो be like a leaf है कि without accepting just जहाँ पानी आपको लेके जा रहा है जीवन का उसके साथ आप चलें, without complaining, without asking for more कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. अगर आप ये कहना शुरू करते हैं तो आप अगर पत्ता है तो वो पत्ता रुक जाएगा कि नहीं अब मुझे यहाँ रुक के ये अचीव करना है यहाँ पे. तो पत्ता अगर पानी की धारा के साथ चलना ज़रूरी है तो उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं अपनी. तो आई थिंक दैट इन दिस लाइफ That's what yeah, was so destined for. and you know I think that even I think I'm just we are playing a role. हम लोग लाइफ को इतनी सीरियसली लेते हैं बट एक्चुअली फिल्म देखते हैं तो उसमें लोग मर रहे हैं या हंस रहे हैं या रो रहे हैं, तो हम भी उनके साथ रो हंस सकते हैं, पर हम घर आते हैं तो हम भूल जाते हैं. आई थिंक साक्षी भाव, दैट्स द वे लाइफ इज. साक्षी भाव. सो वो साक्षी भाव जो है उसके साथ अगर हम जीवन को देखें तो बट it's not easy. It's a practice. And what keeps you busy nowadays? Do you want to work again or not really? What is it that's So I'll tell you're you looking something. for? So I'll tell you again because I am connected with nature. Yeah. And I've always been connected with nature. First of all, my decision to act in a film. तो वो मेरा जो decision था वो मैं act नहीं करना चाहती थी बॉलीवुड में for my own reasons. I didn't want to act. And I was going to Paris. वहाँ मेरा सब सेटअप था क्योंकि because I had to act. I had to enter Bollywood. तो उस समय ऐसा हुआ कि I heard and I saw certain visions and which are difficult to explain क्योंकि वो लोगों को समझ कितनी आएंगी पता नहीं मुझे. And which said कि just do it. You received signs. Just do the film. Just do it. Yeah. Just do it. अच्छा तो just do it करो चलो ये कर लेंगे पिक्चर फिर चले जाएंगे. That was my idea. I didn't think that I was going to stay. But I love acting. You understand? See, so how it is, how I have always been an actor. So how I have been placed in this position. जब मैं नहीं करना चाहती, but in any case वो गुण तो है ही आपके पास. तो अगर आपको वहाँ रख दिया अगर करवाएंगे आपसे तो आप करेंगे और आप पूरी I love the camera. I can be with the camera. I don't feel closer to anything else or anybody else that I do to the camera. Camera is, I have written it in my book. It was camera is my first love. So anyhow, this had to happen. Chalo, ho gaya. Today, when I look back, I think that, it was because it was a transition point for so many things in India that was coming at that time. I was just at the threshold of that change. क्योंकि उस समय अब आप देखिए आशिकी ने नया तरीका हर चीज़ का, चाहे वो म्यूजिक हो, उस तरीके का म्यूजिक नहीं था उससे पहले. सबसे बड़ी चीज़ उस तरीके के हीरो हीरोइन नहीं थे जैसे हमने कपड़े पहने, जैसे हम लोग थे, हमारे जो हेयर कट्स थे. डिवोर्स, दैट वाज द फर्स्ट थिंग टाइम यू लिटरली दैट यू सॉ दैट कि हीरो के पेरेंट्स डिवोर्स हो गए और फादर ने दूसरी शादी कर ली. गर्ल हु वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट. मेरी 5 लाइनें हैं पूरी पिक्चर में. उसमें से एक ये है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ. So I think that I was just placed at that point there, and then I had to get on with my spiritual development because basically that's my start, that's my beginning. And जब achievement हो गया, last उससे बड़ा achievement क्या हो सकता है उस समय जब कांस में पिक्चर रिलीज हो गई 1995 में. I mean there cannot be a bigger achievement than that. And I also got an offer from talent management agency in Los Angeles. And it was like the 3rd largest agency in Los Angeles at the time. So I could have done films there.
बट वो मेरा दिमाग कॉलिंग ही नहीं था आपका। ठन हो गया, कॉलिंग हो गई मेरी कि यार नहीं, अपने को जानना है मैं कौन हूँ, कि मैं ये जो देख रही हूँ, जो मेरे बारे में लिखा जाता है, जो मेरी फ़ोटोएं छाप के प्रेस लिखती है, मैं वो तो नहीं हूँ, मैं कौन हूँ। So I mean, I today want to thank the press that whatever was written about me at the time pushed me to a higher spiritual realm. So I mean, it's just a circle of life. सब लोगों की मेरी लाइफ तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने शुरू से सरेंडर करा हुआ है. I don't have too many desires. I just accept कि होता है कि I love coffee. You know that. Yeah, of course. उसका डिजायर होता है. Wow. So then I look at it, तो ये डिजायर है. So Anu, I would like to ask you that जब आपने काम किया फिल्म इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में, तब क्या आपके जो कनेक्शंस थे उसमें से कुछ दोस्त आज भी आपके साथ कांटेक्ट में हैं या नॉट रियली, और तब काम किया और आज आप जो देख रही हैं इंडस्ट्री, उसमें क्या चेंजेस आपको बेहद पसंद है और कुछ चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही ऑफ पुटिंग लगती हैं? वाकई में उस समय तो मुझे सबसे ज़्यादा ऑफ पुटिंग चीज़ तो और मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि सारा ऑल मनी विल बी इन ब्लैक, right? Because my father is an economist and he's a serious guy, so the thing is I am raised like that, right? Yeah. So I used to be कि नहीं, आप मुझे वाइट में पैसा दें तो आप चेक दें, ये मैं कैश कहाँ रखूँगी. So the thing is that was one of the big things that I had, I just felt To so deal with uncomfortable, it, yeah. so uncomfortable with the thing. But luckily what happened is that whatever the cash came went into paying I was in a Rented place, yeah. I was in a rental. So I started, and that guy was an MLA. So he used to just come and randomly start asking me for money. कि अनु मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे इतने चाहिए, 5 लाख. And somehow or the other, some producer has given me some cash. Some amount, yeah. So I started giving him the cash. Okay. And within 2 years, I bought the house, by default. Yeah. So the thing is that that was one of the things that made me extremely uncomfortable. Second thing at that time that made me uncomfortable was women's portrayal. कि औरत जो है, मतलब कि आप कैसे दिखा रहे हैं औरतों को, कि ना उनका दिमाग है, तो सिर्फ शरीर और उनका डांस करना और थोड़े झटके इधर से लेफ्ट से राइट से करना, और I mean, women are mothers, women की women are so deep subjects. आप उनको कहाँ रिड्यूस करके आपने क्या कर दिया है उनका, मुझे इससे बहुत, that's one of the reasons मैं फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहती थी. बट आशिकी was a different girl who was independent, और मेरे जैसा काफ़ी रोल मेरी रियल लाइफ से मिलता था. So that was another thing that I was discomforting. And the third thing was, of course, India was so far away from the international realm at that time completely. I was working a lot abroad, because I started in 3 years before Aashiqui, I started modeling abroad, and I did London, Paris, New York, and I stayed on there. And तो क्या था कि यहाँ पे मैं वापस आती थी तो मुझे लगता था कि फैशन समझ में ही नहीं आता है. हमारे भारत में हर गांव में फैशन है. I mean, look at like you go to like Rajasthan, you go to Gujarat, the colors, the textures, the combinations, the blouses, the cholis, I mean, it's incredible. The West does not know. We cultivate our own fashion. We cultivate our own crop. We cultivate our own food. Yeah. हर जगह का खाना अलग है. And one is better than the other. So, I mean, I just used to feel कि, we are not being Indians. Why are we not using what we have, our own culture, which is so rich. And then slowly when I went to the spirituality, then I started understanding that the spiritual culture India has. Again, it's oh God, yeah. इस भूमि में सब कुछ शुरुआत हुई है. ये जो भारत की भूमि है, जरा सा देश है हमारा, पर यहाँ की जो धरती है, यहाँ एक एक कण धरती का, इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई है. तो आज मैं देखती हूँ कि आज जितने लोग हैं, लोग जो हैं, लोग कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी हों, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पुअर, कुछ नहीं फर्क पड़ता.
Anybody who is born in India, वो इस धरती में जो पैदा हुआ है ना, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, वो ऑलरेडी योगा जानता है, वो ऑलरेडी ये सब चीजें, वो नेचुरोपैथी, वो सब चीजें जानता है, ये सब नेचुरल जितने एलिमेंट्स हैं, everything right here. but we have forgotten it. Yeah. You know, I was doing conferences abroad, and you know, I've been doing for my foundation. Yeah, the last, I was so about to ask you about so the foundation. 2014. What happened is that, you know, I was healing with my own. I built up my own natural way of healing because I had decided कि मैं chemical तो बिल्कुल नहीं करूँगी, ना मैंने कोई दवाई ली है जब से मैंने hospital छोड़ा है. So I have, you know, so I cook. I studied a lot of, like, you know, what are the herbs one should eat. You know, इस चीज़ के लिए क्या ठीक है, ये सब मैंने बहुत पढ़ाई करी. I like it also. So you know, it's a hobby. Cooking is a hobby, and you know, it's nice. जब मेरी healing शुरू हुई तो मैंने इनको बच्चों को देखा. मेरे को देख के उनके तो मैं तो मतलब I felt so sad. वो बैठे हुए हैं, उनके लिए ये underprivileged हैं, slum के बच्चे हैं, कोई NGO उनके लिए उनको पढ़ाई करा रही है, एजुकेशन देती है उनको. 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास होती है उनकी किसी यहाँ पे, you know, in the barracks of one of the churches here, जगह दे रखी है उन्होंने. But these kids are so, like, you know, ऐसे टेढ़े मेढ़े, and you know, आँखें कहीं मतलब पीली आँखें, मतलब I was just, and you know, ये 8, 10, 12, 14, 16 साल के बच्चे ये हाल. So I just said कि नहीं, इनके लिए तो I have to do something. And you started that foundation. And that's how my Anufan Yoga started, which I made. And then धीरे धीरे 4 साल के अंदर I did about, you know, reached about 2 lakh kids, and then their mothers, because the mothers, of course, it comes from the mothers. and then the foundation came in 2017. But the thing is that life, Joanna, at the end of the day, it's all about who you are inside you. और हम अपने से इतना दूर हो गए हैं, हमारी सारी दृष्टि बाहर की तरफ है. वो क्या कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं पहुँच जाऊँ, ऐसा मैं अचीव कर. इट्स ऑल एक्सटर्नल. पर हमारे अंदर जो कहते हैं कि the gold of life, if there is any, it is inside the human being. Yeah. So I really want to, you know, and I have found that. And now my entire idea is कि यार अब मैं चुप तो बैठ नहीं सकती, मुझे सब तक पहुँचाना है, ये सब लोगों को जागरूक करना है कि ये इस तरीके से. You can see that especially after COVID, stress levels and things are not so good at all. But mental health is a huge issue. And दिन पे दिन और बदतर होता जा रहा है. You know, so I feel कि so I'm you know, I'm trained in it, and I am educated in it, and I'm so glad and grateful that the last 20 years, like I lived as a monk, just to understand how to serve people, to understand how the mind works. And ये सब वेदों में हमारे सब कुछ है. हमें कोई आज को जो है वेस्टर्न साइंस की ज़रूरत नहीं है. वेस्टर्न साइंस 300 साल पुरानी है, हमारी वेदा तो 10,000 साल से ज़्यादा पुराने हैं. Are you in touch with people, you know, industry friends? You know, the thing is, I'll tell you, my life has moved so fast. मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है. Suddenly I'm here, suddenly I'm not here, suddenly I'm in Mumbai, suddenly I'm in, you know, Uttarakhand, suddenly I'm in, you know, New York, suddenly I'm in Kutch, Gujarat, suddenly I'm, you know, Kutch, Gujarat, I ran a meditation center. So, you know, the thing is that how can anybody cope with my changes? I only can't cope. कोई नहीं, you know, so it's being fast paced, you know, so and the changes are dramatically different. आप एक ही फील्ड में मूव कर रहे हो तो समझ में आता है. Okay. ये तो मतलब कि jumping from social work to modeling, then to films, then to, you know, sannyas, to, I mean, like कि there's no Quite dramatic. Yeah, totally dramatic. What kind of project you would want to do? आप देखती हैं टीवी पे, OTT पे भी बहुत कुछ आ रहा है. So, you know, I mean, okay, so if I'm in the film business, let's look into my past. I have always been very, 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 very choosy. Yes. Because after Aashiqui, I could have signed hundreds of films, right? Yeah. But I only signed 4 films. I have always had this thing कि what I am doing is for the good of the people at large. It's not about कि मैं अपने को दिखाना चाहती हूँ कि मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ और मैं इतनी बड़ी हिट बन जाऊंगी. नहीं, it's not about that. It's about what can I give to the people there. What can I present which could be beneficial to them in their lives. When I did Aashiqui, मुझे लगता था कि लड़कियों को ये पता चले कि यार तुमको क्या ज़रूरत है. You don't
And at that time, girls were not thinking like this. You can be independent. You don't need to depend on a guy. You can have a man for, or you can have a lover, you can have a husband, a partner, whatever, वो अलग है. But तुम्हारी अपनी सत्ता एक औरत की तरीके से तुम उसको establish कर सकती हो. तो तुम उसको क्यों नहीं कर रही हो? So that was the thing. And today I feel that, who knows, now there are a lot of platforms, women-centric films are there. There are a lot of platforms in OTT and etc. Who knows what will come up? I don't know. But you are open to doing some totally interesting open. work. I have always been an open person. Wow. And now that I'm open here, I'm fully open. Lovely. That's lovely to know. We would like to see you on screen for sure. Yeah, of course. I would love to. Yeah. And all the best for Thank your you so much. amazing, spiritual, glamorous journey. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.